नमस्कार दोस्तों। आप सबको मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है भाई। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट किस तरह से रिएक्शन दिया। आज सुबह हम लोग देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा गैप डाउन दिखा रहा था 50-60 पॉइंट। वो पूरा ग्लोबल मार्केट का वजह से गैप डाउन दिखा रहा था। कल यूएस मार्केट रेड में बंद हुआ, इसी का कारण हमारे मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर शुरू में दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट आगे बढ़ा और हमने एक अच्छा सा रैली देखने को मौका मिला हम लोगों को। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग देख लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया और मार्केट कैसे बिहेव किया और कल के लिए क्या रहेगा। इससे पहले दोस्तों, जैसे मैंने बोला, मेरे एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसमें से मैं खासकर अपडेट्स देता हूँ। आज का अपडेट हम लोग देखेगा तो आज पहले पोल देखेगा तो 49% लोग प्रॉफिट में था और 25% ओनली लोग लॉस में रहा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात किया था आज हमारे ग्रुप में, वो था सिंथेटिक फ्यूचर। सुबह हम लोगों ने देखेगा तो सिंथेटिक फ्यूचर नेगेटिव था, वो पूरा डिस्काउंट में था। मैंने सब ग्रुप में सबको बता दिया हाउ ऑपरेटर इज प्लेइंग विद द सिंथेटिक फ्यूचर एंड विक्स। So even for September and October future, that was also under discount. So what will happen is that when the future is at discount and VIX is at low, even though market moves up, the call premiums may not increase. At the same time, put premiums will not decay. So that is a phenomenon. Then I said, okay, so for the short covering range also I mentioned that, okay, so if for Nifty it is about 25, 30, 40 level, if Nifty is crossing this level, then you can look for a short covering. मैंने ये भी बता दिया put writers increasing and that shows the confidence level of the writers. So and I mentioned that, okay, this clearly indicates a breakout. So and I've also shown that, okay, so then when there was a point the synthetic future turned green. So तब मैंने बता दिया भाई ये सिंथेटिक फ्यूचर सब पॉजिटिव होने वाला है। जब प्रीमियम आर्ट होना शुरू हुआ था तब मैंने बोला था कि एक शॉर्ट कवरिंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ओआई भी डाला था। ओआई कैसे लाइव मार्केट में ओआई चेंज होते हैं, you can see here the call writer OI was decreasing and the put writers OI was increasing. So that clearly indicates an up move. और उसके बाद मैंने बोला बहुत सारे जो रिटेलर्स लोग रहते हैं वो शॉर्ट करना में ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला जितना लोग शॉर्ट करने के लिए पसंद करते हैं, लेकिन डाटा वैसे बना ही नहीं है। डाटा ऊपर दिखा रहे तो शॉर्ट करके कोई मतलब ही नहीं है। और आखिर में मैंने 1344 में मैसेज डाला मार्केट इज कंसोलिडेटिंग फॉर फर्दर अपमूव्स। तब उसी टाइम मार्केट 2570 पे था। मैंने बोला कि सेफ प्लेयर चाहे तो बुक करके निकल सकते हैं। चलो भाई हम लोग देख लेते हैं हमारा डिस्कशन क्या था और मार्केट ने कैसे बिहेव किया। So without wasting much time guys, let us look at the charts. So if you look at the charts here, so you can say that see that, okay, Nifty opened a mild gap down. From there, so it made a quick red candle. After that, it started moving up, and you can see here, okay, so it took the support from 25, 24,930. So if I mark that support level, so thereafter this is the level, okay, 930. So thereafter market didn't even break this particular level. And what we discussed is that two levels we discussed yesterday that, okay, if market is going below 24,960, you can consider a short. Another level I discussed was 920. And after the initial dip, market never breached these levels. It was continuously moving. If you look at the 5 minutes time frame, the market was continuously moving above the 20 EMA. जब तक 20 EMA के ऊपर मार्केट रहते हैं, सर शॉर्ट करके कोई मतलब नहीं है। सो लास्ट में जैसे यू कैन सी थोड़ा सा डिप आया, वो भी 20 EMA और 50 EMA, और 50 EMA पास वो सपोर्ट ले रहा। तो just market close करने के टाइम after 3 o'clock there is no point in taking any trade or any carry forward. And okay, so let us look at our view for tomorrow. So tomorrow marked two levels. So one level is, let me bring this up, that is
25,030. Let me add another line here. Okay, so mark this level. This is coming 2530, and today the breakout happened above this level. So mark this level 2530. So if Nifty is breaking below 2530, then only consider shorts. For longs, so today's high, if I mark here, so you can say that 25,090 or round figure 25,100. Okay. So if market is moving about 25,100, you can consider a long. Also, like, if for some reason tomorrow market is opening a gap down and it is taking support around 25,30, then you can also consider a long in that case. Okay. So major breakout, it will happen above 25,100, then upper level is 25,200. Okay. So let us also take a look at the option chain also for Nifty. So here is the option chain for Nifty, and you can see here for 25,000, the call writers, they have exited, and yesterday it was almost 2 crores and 1.25 crores. So you can see that hardly some call writers left, somewhere around 89 lakhs left. But if you look at the put writers, it is coming around 2 crore. Put writers in 25,000, again almost 1 crore at 2550, and you can say that 1.17 crore at 25,950 and 1.58 crore at 25,900. So all this is showing the writer confidence, bull confidence. And if you look at the resistance, we can see that 1.23 crore OI, or call writer OI at 25,100. So that will act as the first resistance. Then another resistance you can see here is 25,200. So mark these levels closely, guys. Okay, now let us take a look at the Bank Nifty. Today, if you can see that Bank Nifty was a dragger. Okay, so Bank Nifty was underperforming compared to Nifty. And what levels we marked yesterday? Yesterday we were talking about the shorting level was 55,725, and the opening itself, it has moved down below 55,725, and another level we mentioned is 55,650. You can say so. Market took a support from 55,650, then it started moving up. So thereafter, it didn't even really break below 55,725. So for tomorrow, so the levels are pretty easy. So let me bring this level. So this, you can say 55,780. Round, make it a round figure, 55,800. So if Bank Nifty is crossing above 55,800, you can see an up move towards 56,000. And another another up move is possible above 55,750, round figure you say. And the shorting levels are intact. Okay, so one is 55,725, and another one is on 55,650. So mark these levels closely, guys. Let's also look at the mid cap Nifty levels. So mid cap Nifty, you can see that it has given a very good up move. So yesterday what we discussed is that we will consider a long above 12,920. यहाँ से 13,000 तक एक अच्छा सा रैली हमने देखा, तो कोई रुकावट नहीं, ये कभी 20 MA का तोड़ा ही नहीं है, हमेशा 20 MA के ऊपर है. जब भी ये कोई भी इंडेक्स 20 MA के ऊपर रहते हैं 5 minutes टाइम फ्रेम में, उसके शॉर्ट करना बेकार है. So always look for buy the dips opportunity in such index. So tomorrow the levels are very clear. So for long, consider 1320. So anything which is coming above 1320, consider a long. For short, so we can say mark one more level. So that is 12,980. So if the mid cap Nifty is going below 12,980, we can consider a short. ओके, हम लोग मिड कैप के ऊपर क्या बता रहा था? मिड कैप का हायर लेवल 1320, that is for longs, and for shorts, two levels I mentioned. One is 980, then 940 also you can consider. So you can get a target up to
12,870. So if the breakdown happens, look for the EMS. So any shorting, so we look for it is below 20 EMA and 50 EMA. चलो हम लोग क्विकली सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बोला शॉर्ट्स बिलो 81,500, तो 81,500 तोड़ा ही नहीं तो शॉर्ट बना ही नहीं है। और हम लोगों ने बोला तो लॉन्ग अबो 800, तो वो भी बाद में मिला। सो किसी ने अगर 81,500 से ऊपर एक लॉन्ग लिया तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया। चलो हम लोग कल के लिए लेवल देख लेते हैं। कल के लिए एक लेवल है 82,000। सो अगर सेंसेक्स 82,000 को ऊपर निकल गया तो हम लोग एक लॉन्ग के बारे में सोचते हैं कि आज का दिन हम लोग पूरा देखेंगे तो पूरा इन्फी और आईटी स्टॉक्स ने इसको संभाल ली। इन्फी ने ऐसे मूव मार दिया कि 3% ऊपर ऊपर का मूव, तो नेचुरली निफ्टी और सेंसेक्स तो ऊपर जाना ही है। और ये भी कभी 20 EMA को तोड़ा नहीं। जब भी कोई भी इंडेक्स 20 EMA के ऊपर रहते हैं, इसको शॉर्ट करना बेकार है। तो हमेशा लुक फॉर डिप्स। सो फॉर टुमारो 2 levels mark. So for Sensex, if it is breaking below 81,700, consider short, and the first target is 81,500. So major fall below 81,500, and upside it is 82,000. So let us take a look at Infi. And if you have not subscribed my channel, please subscribe and watch the first video. So I have explained how to select the best F&O stock. In that I've taken a reference of Infi. अगर Infi के बारे में हम लोग देखेगा तो Infi ने क्या कमाल का मूव आज कर दिया भाई, तो जवाब नहीं है। करीब 4% का मूव Infi ने दे दिया। यहाँ हम लोग देखेगा तो मैंने 45 मिनट्स का चार्ट देख रहा हूँ। यहाँ से देखो कितना सुंदर तरीके से इसने 50 EMA से एक बाउंस मारा और कभी रुका ही नहीं, कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। कोई भी इन्फी में लॉन्ग है, इन्फी का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 1570 इवन 1600 तक जा सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग बुलिश और बेरिश का बायस बना के बैठे रहते हैं। हमारे मार्केट में इसका कोई जरूरत भी नहीं है। हमेशा लेवल टू लेवल खेलने की कोशिश करो दोस्तों। लेवल हमारा साथी रहता है। लेवल और प्राइस एक्शन के देखो, अगर अच्छा वॉल्यूम बनना शुरू हुआ तो लॉन्ग का सोचो। अगर आपको शॉर्ट करना है कोई दिक्कत नहीं है, जब सपोर्ट ब्रेक हुआ बिंदास शॉर्ट मारो। लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है और आप शॉर्ट में बैठा है। वैसे उल्टा भी हो सकते हैं, जब मार्केट नीचे जा रहे हैं आप लोग लॉन्ग बनाते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट का सिनारियो, यूएस फ्यूचर्स थोड़ा सा रेड में दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। एक और चीज गौर किया होगा तो आप लोगों को पता चलेगा, जितना भी ग्लोबल मार्केट है वो सब ऑल टाइम हाई मार चुका है कई बार, लेकिन हमारा मार्केट पिछले 1-2 महीने में अंडर परफॉर्मिंग है। तो हमारा मार्केट भी मेरे ख्याल से एक बार 25,500 और 26,000 की तरफ जाना चाहिए, अगर कोई नेगेटिव न्यूज टैरिफ वारिफ के ऊपर नहीं आया तो अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आया तो हमारा मार्केट ऐसे झूम उड़ेगा, तो सबको बियर्स को पाड़ के रख देगा भाई। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स है वो क्रिएटर के लिए मोटिवेशन बनाते हैं। मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा सा लर्निंग वीडियोस और कंटेंट्स डालूंगा। थैंक यू गाइस, बाय।